Hello everyone, very good morning. Welcome to Target Academy, and we are going to study Engineering Mathematics 2 for Astu and semester examination for the second semester. We'll start with differential equations because it will take less amount of time to cover entirely. And under differential equations, we will study about ordinary differential equations, and in under ordinary differential equations, we'll study about two types. We will study about uh, ordinary differential equations of order 1, and then we will study about ordinary differential equations of higher order. Am I clear, all of you? So first and foremost let us study about ordinary differential equation of order 1, first order. Yeah, fair. Ordinary differential equation of first order. What do you understand by order of a differential equation? Can anyone tell me? Although they have not asked you about this question in the previous years, but I think you must understand what is order of a differential equation. Can anyone tell me, guys? The highest derivative in the equation. Okay. So we will have highest derivative as in, like, if I write down d2y by dx square plus we'll write down, suppose we can write down sine x dy by dx plus x is equal to 1 for something like this. If I am making a differential equation, then in this case order is how much, all of you? Or 2, and degree? No, it has a degree is 1. So we will always see what is the power of the highest order derivative. If it have been something like this would have become degree 2. What my point, all of you? So order and degree of differential equation is very important to understand because it is asked in competitive examinations as well. So order is the highest order derivative appearing in the entire differential equation. In this case, this differential equation has the order of 2 because there is an operator of order 2, yani ki d2 by dx square, something like that. And whatever would be the power of the equation, yeah, what would be the power of the highest order derivative, that will be known as degree of the differential equation. But you will have to make the equation free from the radicals and ratios and everything. I will talk about order and degree of differential equations when we completely dive into the preparation of competitive examinations also. So let us see, guys. या उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. In this case, so order and degree of differential equation, if I write down something like this, चलो एक example और y into dy by dx plus x square divided by dy by dx is equal to sorry, y is equal to, it is equal to y is equal to this much, and we have dy by dx into x, and this is it. Now tell me, what is the order of differential equation here, all of you? Here we have order 2, degree 1. What is it, guys? What is the order here? 1. And degree? Degree, if you are saying 1, then it will become wrong. Why? Because there is a fraction here, you see. The differential equation should not have fractions or radicals. If I say this is something, I can write down this part as x squared dy by dx to the power minus half. This is a radical. I cannot have this in writing down the differential equations. So what I will do is I'll simplify a bit. Y is equal to, I'll take the LCM, so it will become x dy by dx to the power 2 plus x square, and then this dy by dx will go on this side. Now this our equation becomes something like this. You can see here x square. I'll write down properly x square. Now in this case, this has become wrong. Now in this case, order is 1, but degree is 2 because the highest order derivative is dy by dx and its power is 2. Hence we'll write down degree 2. Am I clear, all of you? Is it fine? Yes or no, guys? Understood?
Only two of you. Chalo. Anyways, so this is what we have. So for example, let us see one more question on order and degree. 1 plus dy by dx to the power 2 to the power minus 5 by 3 is equal to a d2y by dx square, something like this. So in this case, if you will be asked about order and degree of differential equation, what will you write down? What is the order here? All of you. Order is easy to write, no problem. Can anyone tell me? Order is 2. Very good. This is the highest order derivative. And degree? All of you. You see, here it is a radical. I have to remove it. So if I take cube root on both the sides, if I take the cube power 3 on both the sides, so if I take the cube of both portions on LHS and RHS, I'll get minus 5 by 3 entire to the power 3 is equal to, here also I'll take cube on this side, I'll have d2y by dx square power 3. This 3 and this 3 will get cancelled. Ultimately 1 plus dy by dx whole square. I'll have minus 5. Minus 5 not a problem. A cube and I'll have d2y by dx square a cube. Now this thing will have order as 2, degree as 3. So highest order derivative ka whatever the power we have, that is it. Am I clear all of you? All of you? Okay. So this was about order of differential, yani ki order of differential, order and degree of differential equations. The most important topic, one of the most important topic which you guys are asked generally in this examination, regularly I have seen in all the papers back to back, is called linear differential equation of first order. Linear differential equation of first order. So the general method, a general way to represent the linear differential equation is what? Is all of you? How do we represent the general differential equation or the general method of representing linear differential equation of first order? Can anyone tell me? You must have seen something like this in your classroom teaching. Dy by dx plus py is equal to q. Have you seen this? All of you? All of you? And this is called Leibniz linear differential equation. Now, why is it linear? Linear का मतलब क्या हुआ? Whenever we talk about linear, something that strikes our mind is the straight line equation that we talk about, like y is equal to mx plus c. This is called a straight out equation of a straight line because both the variables, be it dependent or independent, have degree of 1. दोनों में degree of 1 रहेगा. ठीक है? So this is a differential equation. How to identify whether the given differential equation is linear or not? Then in that case you will have a first order है तो first order is always dy by dx. So always remember the degree of the differential equation will always be 1. Power 1 रहेगा guys. Am I clear all of you? ठीक है? Then a variable, suppose variable like variable and its derivative, जैसे कि y and dy by dx will never multiplied together. कभी भी multiplied form में नहीं रहेगा. They will never be in a multiplied together form like y into dy by dx, y into dy by dx ये नहीं रहेगा ऐसे. Alright. So in that case, that will not become. This is not a condition of differential and linear differential equation. This disregards the condition of linearity in the differential equation. So dy by dx के साथ y, since this differential equation is in here, y is the independent variable and x is a dependent variable. We are differentiating y with respect to x. Hence, the variable y and its derivative with respect to the independent variable that is x should not be in multiplied form. Am I clear all of you? All of you guys?
And here p and q, these two things that appear here, p and q, they can be either constants or they can be function of x only, not y. अगर इस सिचुएशन में दिया हुआ है तो if this is the form given to you, p and q must be a function x or only or constants, then only we can say that the given differential equation is linear. मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल से जो आपको एंड सेमेस्टर में तो एक और तरीका से आपको दे सकता है, इफ यू राइट डाउन dx by dy plus px is equal to q. किसी का माइक ऑन है प्लीज? Someone's mic is on. Khanjan, your mic is. So dx by dy plus px is equal to q is the value, is one of the way we are representing the differential equation again. Now in this case, x is a function of y. Differentiation of x is taking place with respect to y. So here x and dx by dy, x and dx by dy, not in multiplied form, not in multiplied form. P and Q can only be constants or function of y only. अगर इस तरह से फॉर्म में आता है तो is it clear all of you? All of you guys, yes or no? Is it clear? I'll show the examples. I'll solve some questions also. Don't worry. Okay. But in order to solve, how to solve linear differential equation? How to solve linear differential equation of first order, then there is a method. You will be given, for example, I am writing down the general equation dx dy by dx plus py is equal to q. Then how you will do it? What is the first step? Can anyone tell me? आप लोग को तो CI में पूछा होगा ऐसे प्लीज. What is the first step to solve a linear differential equation? All of you? Pernil, what do you think? Abhijit? How do we solve the linear differential equation of first order? What is the first step in doing this? All of you? Any idea? Pernil, yes or no? Na Pahurisa. What about Abhijit? Pahurisa ne মনত আছে? পাহৰি গৈছা? এক্সাম ওচৰত আছে, পাহৰি গলে কেনেকে হ'ব? First step is to determine, to find integrating factor. To find, শুনিছা নামটো? Have you guys heard about it? Integrating factor, denoted as IF. एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बैक टू बैक आपका क्वेश्चंस 2024 में ये आपका आस्तु का क्वेश्चन है. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ABCD. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, बार बार पूछा है. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ऐसे करके आपको बार बार पूछेगा गाइस. दे विल आस्क यू, so you will have to keep in mind how to solve the question if given to you. What is integrating factor? कैसे पता करोगे? So this is the way to solve only linear differential equation of first order. Integrating factor की है. What do we do with integrating factor and how do we find out the integrating factor? So integrating factor is equal to P given to you. P can either be a constant or it can be a function of x if it is represented in this way, dy by dx. So integrating factor becomes e to the power integration of p dx. You must have seen this in your classroom, guys, all of you, college classroom teaching. Integrating factor. Have you seen this? It's in your syllabus. Pernil, college में पढ़ाई से no? College में तो पढ़ाई से obviously. So once you find out differential integrating factor, then the second step will be directly about the solution. The second step will be how will you write down? Since the differential equation is based on y, dy by dx, so you will write down the solution. Solution is y into integrating factor is equal to, on this side we have q, so q into integrating factor
Now differential equation, you see differential equation is with respect to x. Now you are finding out integrating factor e to the power p dx. You are integrating with respect to x. So in this integrating factor will be a function of x because we are integrating p, and p is what? P can be constants or function of x. For example, if I write down p is equal to, if I get it as 2, for example, so e to the power p dx will be equal to e to the power 2 dx integration. You will have e to the power twice x. Am I clear, all of you? Okay. The integrating factor is also a function of x, provided we have the differential equation given in this form. So y into integrating factor is equal to q into integrating factor into dx का इंटीग्रेशन प्लस c. ये कोई आपका indefinite integral है. There are no limits, so we'll have constant of integration. We can find out the constant of integration if we are given the values of the differential equations. For example, I'll solve you one question here first. So let us see. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं guys. तो first question here, dy by dx plus twice xy is equal to e to the power minus x square. Solve this with y0 is equal to 1. इसका मतलब क्या हुआ कि you have to solve this differential equation and there is one value given to you. This is called initial value problem. Initial value problem. इसमें क्या है, initial value दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि at x equal to 0, y is equal to 1. This one. Then we can find out c. Now you pay attention, close attention to this numerical. This numerical has appeared in something which you will have to appear by the end of final year in GATE 2006. This has been asked for 1 marks. अब गेट का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. आप देखना कौन सा टफ है कौन सा इजी है, आपको खुद पता चल जाएगा. सो सम myth हैज टू बी क्लियर गाइस. ऐसा दिया हुआ है. So if you pay close attention to this, you will understand, अच्छा, this is in the form dy by dx plus py is equal to minus e to the power minus x square. So in this case, e to the power minus x square की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, q. So if you closely attach this and find the resemblance between these two, then you will find out p is equal to twice x given to you and q is given to you as e to the power minus x square. Both of this p and q are function of x only. Constants नहीं है, only function of x है यहाँ पे. So in this case, in order to solve this, first step you will have to find out is the integrating factor. Integrating factor is equal to e to the power p dx. e to the power p का वैल्यू क्या आएगा, twice x dx इंटीग्रेशन. तो e to the power twice x का तो 2 कॉमन आ जाएगा. x dx का इंटीग्रेशन is x square by 2. So 2 and 2 gone, we will have e to the power x square. So our integrating factor is e to the power x square. So second step is solution. Solution is, what is it? Y into integrating factor q into integrating factor dx, integration of q into integration है plus c. So हमारे पास y into integrating factor, तो y into e to the power x square. q का वैल्यू e to the power minus x square given to you, and integrating factor e to the power x square dx plus c. Quite easy, very very easy. आपका आस्तु का पेपर से इजी है गेट का क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको सच में. So this and this, see, you see e to the power minus x square को आप 1 by e to the power x square लिख सकते हो, और इधर e to the power x square. This 2 will be gone. So I'll have y into e to the power x square. This gone, will be left with dx plus c, which implies y into e to the power x square is equal to x plus c. Am I clear, all of you? And then now you are given y at x equal to 0 is equal to 1. So you will put x का value 0 here. Y is 1 when x is 0. So e to the power 0 is equal to 0 plus c. e to the power 0 is 1, तो c का value क्या आ जाएगा, 1. Therefore solution जो होगा y into e to the power x square is equal to x plus 1. I can write down y is equal to
1 by e to the power x square x plus 1, or you can write down e to the power minus x square x plus 1. This is how you solve new differential equations, guys. Linear differential equation. Am I clear, all of you? Yes or no? Pranil and Abhijit, clear? Khanjan, is it clear to you? अब आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, हाँ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, डोंट वरी गाइस, हर एक चीज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये गेट का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, देखो, हाँ, फिर गेट का क्वेश्चन एक और सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोग को, क्योंकि गेट में जो चीज आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, दैट इज द ओनली थिंग दे आस्क यू इन द एग्जामिनेशन। सो द गिवन इज टू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्व, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सॉल्व एक्स dy by dx plus y is equal to x to the power 4 with y at x equal to 1 is given to us 6 by 5, 6 by 5 ऐसे दिया आपको। तो you'll pay attention now again, you see guys, इसको ध्यान दो। आप एक काम कर सकते हो, आप सोचोगे कि dy by dx पावर 1 है, dy by dx और y तो मल्टीप्लाइड में नहीं है, y अलग से है। All right, now what we can do is, what we'll have here is, okay fine, एक काम करते हैं, now let us write down, rewrite it, x से divide कर दो, I'll have 1 by x into y, we'll have x4 divided by x, so I can write down dy by dx plus 1 by x into y, ये आ जाएगा x cube। Now pay close attention to this and find the resemblance with this general solution, general equation of Leibniz linear differential equation. You will see that p is equal to 1 by x and q is equal to x cube. Both of these are function of x, not y. dy by dx and y are not multiplied together. Linearity is maintained, degree is 1. This is a linear differential equation of first order. So in order to solve it, first and foremost, I'll have to find out integrating factor. So integrating factor will be equal to e to the power integration of p dx. P is 1 by x. So e to the power 1 by x dx. E to the power 1 by x. So I can write down ln of x. If you guys are good with integration, then only it will be good for you. Otherwise, you will be stuck. दिमाग खराब हो जाएगा फिर सॉल्व करने में, नहीं तो e to the power ln x. ln का मतलब क्या होता है? ln is nothing but log of base e. तो e ln x, तो आई कैन राइट डाउन e log of base e x. अगर बेस सेम है, ठीक है, तो अल्टीमेटली this becomes x only. This value comes here basically. Am I clear, all of you? ठीक, is if there is any doubt, let me know guys, हाँ। तो ये x आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? x आ गया। नाउ द सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यू विल हैव y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx integration of this plus c, and we'll find out c because I have been given the initial value, यानी कि x equal to 1 पे y का वैल्यू 6 by 5 है, so y into x, q का वैल्यू x cube है गाइस, देख लो, q is x cube into x dx plus c, which implies y into x, तो x to the power 4 हो जाएगा, x to the power 4 का इंटीग्रेशन x to the power 5 by 5 plus c, so at x equal to 1 y is equal to 6 by 5, चेक कर लो guys, देख लो, x equal to 1 y is equal to 6 by 5, x का वैल्यू पुट कर दो, तो y का वैल्यू 6 by 5, x का वैल्यू 1, ये पे 1 by 5 plus c, तो c is equal to 6 by 5 minus 1 by 5, I'll have 5 by 5 which is equal to 1, c का भी वैल्यू आ गया, therefore solution is equal to y into x is equal to x to the power 5 by 5 and c is 1. This is your answer. Am I clear, all of you? Yes or no? तो इस तरीके से आपने गेट का क्वेश्चन कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप गेट का क्वेश्चन सेकंड ईयर से सॉल्व करना शुरू कर लोगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। आपको इतना प्रैक्टिस करा देता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। तो लेट अस सी गाइस व्हाट विल हैव हियर।
तो इन दिस केस ना, अब आपका थोड़ा सा आस्तु का क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये देखो, अब आपका आस्तु का क्वेश्चन का लेवल देखो और गेट का क्वेश्चन का लेवल देखना। हाँ, ये गेट का क्वेश्चन है, दो इजी सा क्वेश्चन पूछा, आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में दिमाग खराब होगा। हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ लेक्चर टू रिकॉर्ड, हाँ हाँ पावा पापा पावा पापा पापा, नो प्रॉब्लम, এতে তো থাকিবা ন ক্লাছ কৰিবলৈ, একো নাই একো নাই, ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নাছিলে এইটো, এইটো বেছি যি পঢ়াই আছো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। So yes, you guys have solved two numericals of gate. Now let us see what you have been asked in Astu. Astu में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी निकालने पूछेगा और कभी बोलेगा कि सॉल्व भी करो, सॉल्व करने को बोलेगा आपको। तो सॉल्व करने को बोलेगा तो देखो, तो आप ये देखो, अब आपको ये दे दिया है, अलग अलग है, हो गया है, अब आप क्या करोगे। तो अब आस्तु का लेवल को मिलाओ और गेट का लेवल को मिलाओ, और आपको जो चीज आस्तु में भी पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में वही चीज गेट में भी पूछ रहा है। This is not just this is not just clearing your concept for us to, this is also making you aware, and I am counseling you कि do not fall into the traps of your seniors saying that कि gate की करिबा, gate दी लाभ नाय बा, gate बहुत टान, no, nothing like that. Gate is easier than whatever you are experiencing in Astu. I'm just being honest with that. So integrating factor of this, तो आपके पास क्या है, मैं आपसे देखना चाहता हूँ, अभी आपको जो चीज समझाया वहां से आप कितना सॉल्व कर सकते हो। तो 1 + y² dx इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स y minus x dx। এটা কোৱাচোন, how will you find out integrating factor ওলাব কৈছে, তো definitely this must be a linear differential equation obviously, হ'ব নে নাই all of you guys, what do you say, क्या रहेगा। So how will you do it, how will you find out whether this is a linear differential equation or not, anyone, क्या करेंगे बताओ। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, देखो ट्राई करेंगे तो डीवाई बाई, सॉरी यहाँ डीवाई है, वेरी सॉरी, दिस इज डीवाई, वेरी सॉरी। तो डीवाई को कैसे लिखेंगे आप, डीवाई बाई डी एक्स, आप सोचोगे कि अच्छा कैसे करके देखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स कर लेते हैं और इसको इधर ले आएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, सोचने में दिक्कत लग रहा है। यानी कि आप क्या सोचोगे, देखो जनरल 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 वे स्टूडेंट्स क्या स्टार्ट करते हैं, हाउ डू दे परसीव दिस क्वेश्चन, तो लोग क्या करेंगे, डीएक्स को उधर ले जाएंगे, आई विल हैव डी वाई बाई डी एक्स, এটা তো ইয়াত আহি গ'ল, dy by dx ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর আহি গ'ল, on this side I'll have 1 plus y square, and you will try to bring this on this side, tan inverse y minus x, so dy by dx তো এইটো হৈ গ'ল ভাই, so dy by dx যেতিয়া এইটো হৈছে, then if it is becoming something like this, then आप सोचोगे कि भाई एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से कैसे लेके आए। अब तो dy by dx हम लोग को तो लिखना है, dy by dx plus py is equal to q का फॉर्म में, this becomes so difficult now. So what I would suggest is कि ऐसे मत करो, एक बार लिखने का सोचा तो देखो यहाँ पे एक ये है और ये है, तो this entire part, this entire part of this equation can go and in the denominator on this side and can be broken down, tan inverse y by 1 plus y square minus x by, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, inverse y by 1 plus y square minus x by 1 plus y square, ऐसे लिख सकते हो आप obviously। am I clear all of you? ठीक है, तो इसको एक काम करो, एक काम कर सकते हो आप, इसको dx by dy के फॉर्म में लिख सकते हो। तो dx by dy you can write down tan inverse y minus x 1 plus y square. So I can write down this as dx by dy is equal to tan inverse y by 1 plus y square minus x 1 plus y square. Now what you do is, dx के फॉर्म में है तो इसको x वाला पार्ट को इधर ले आओ, तो dx by dy plus 1 by 1 plus
y square into x is equal to tan inverse y by 1 plus y square. अब इसको देखो, this is very much a linear differential equation with respect to x है यहाँ पे देखो x dx by dy plus px is equal to q. In that case, p and q must be constants or function of y only, not x. So definitely this is a function of y only. This is a function of y and this is also a function of y. Am I clear all of you? Yes or no? Bolo. This is how you will have to try, you will have to break it down or try to bring it out. कि अच्छा कैसे किस फॉर्म में लिखे so that we can easily denote in form in terms of linear differential equation. Now you see here guys, अच्छे से देखो, अब तो इस फॉर्म में आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा. ये आस्तु का क्वेश्चन है आपका. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e टू द पावर p. पहले dx dy by dx करते थे, जब dy by dx था प्लस py is equal to q, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e टू द पावर p dx. Here we will have p dy. तो p is e to the power 1 by 1 plus y square. सॉरी ठीक से लिख देता हूँ आपको. e to the power 1 by 1 plus y square dy integration. क्यों है यार इंटीग्रेशन क्यों होगा गाइस? व्हाट डू राइट डाउन? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus y square dy क्यों हो पड़े? ऑल ऑफ यू Cornel, any idea? इंटीग्रेशन जाना नहीं ना टफ लगे इंटीग्रेशन तो टफ लगे ना. व्हाट अबाउट खंजन, इंटीग्रेशन कहने का लगे इजी और टफ? अभिजीत, व्हाट अबाउट यू? Integration is the toughest thing, one of the toughest thing in mathematics basically. Yeah, differentiation is stark opposite to it. Differentiation is very easy. Differentiation can be done properly. But मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझाता हूँ. कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेल मी dy by dx of tan inverse x की है, all of you, can anyone tell me what is the differentiation of tan inverse x? Anyone? Just try. Abhijit, take a try. Yes. It is 1 by 1 plus x square. If you do differentiation d by dy of tan inverse y is equal to 1 by 1 plus y square. ठीक है, तो 1 d inverse tan inverse y का differentiation ये है. So definitely differentiation of a fact of a value of a function is this, then the integration of this 1 by 1 plus y square dy को जब इंटीग्रेशन करोगे तो यही मिलेगा ना tan inverse y. So integration of 1 by 1 plus y square will be e to the power tan inverse y. All of you got my point? Yes or no? Please respond. आपको याद रखना पड़ेगा. These are the standard formulas that you will have to keep in mind. Sometimes you will have to study meticulously without your phones or something so that you develop some relations to understand. I think nobody has taught you mathematics the way it should be taught, because calculus is something which will be utilized by you guys, be it civil or mechanical engineering, till the end of your engineering class. Sorry, 8 semester तक calculus का use है ही है, हर जगह है. You can't escape it. Whenever you do some derivations, calculus is definitely coming into place. It will play a very vital role. So you cannot escape. You can't think कि अच्छा मैथमेटिक्स 3 तक पढ़ लिया, थर्ड सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ना है. बट कैलकुलस विल कीप फॉलोइंग यू गाइस इन ऑर्डर टू सॉल्व सम इक्वेशंस. जैसे कि वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, ये सब में जब पढ़ोगे तो एंटायर थिंग इज डन बाय कैलकुलस. हम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e to the power tan inverse y. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड कि बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है. तो e to the power tan inverse y is the आंसर इन दिस केस. लेकिन अगर आपको बोल देगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो सॉल्व कर दो इसको, 5 मार्क्स का दे दिया, सॉल्व दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तब क्या है?
तब तो मेरे पास ऐसा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो तो वी हैव रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव गॉट dx by dy प्लस 1 by y स्क्वायर x, देखो यहाँ पे x था शायद, हाँ x इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस y स्क्वायर, ऐसा था guys, देखो। अब बोल दिया कि भाई एक काम करो, इसको आप लोग सॉल्व कर दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपने सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तो आप लोगों ने यूज कर लिया, you have found out the value of integrating factor. This was the differential equation with respect to x. तो x का differentiation with respect to y हो रहा था, and then we'll have to solve it. Now पहले क्या था? पहले था dy by dx plus py is equal to q. तो solution था y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. But now, since it is with respect to x, x is being differentiated with respect to y. It is dx by dy. So I'll write down x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. dx नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा dy. dy आएगा because integrating factor is a function of y. So x into e to the power tan inverse y is equal to q क्या है? q is tan inverse y by 1 plus y square dy, ऐसे आएगा प्लस सी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखा ही नहीं, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power tan inverse y into dy प्लस सी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस मच। अब आप बोलो एक चीज, कैसे समझ में आएगा कैसे? हाउ विल यू फाइंड आउट? अब इसको सॉल्व करना है गाइस, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैन यू सॉल्व इट? पढ़ेल ट्राई करबो पारिबा नेकी ना नुआरी पाइतिया एक गोटेखिनि इंटीग्रेशन? ठीक है, रेस्ट ऑफ यू व्हाट अबाउट खंजन? दिगदार पाबा नेकी এটা সলভ করব? কি করবা কোয়াসুন, जस्ट हैव लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि इसको सॉल्व करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू हियर? See, there are two things ना, two functions we have guys, three functions we have here. You see, तीन functions है, एक inverse trigonometric है, एक exponential function है और एक algebraic है ना all of you? So much of three different types of functions, not possible to solve. दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे, फिर लगेगा कि क्या करें समझ नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? लेट अस एज्यूम समथिंग ऑफ इट। देखिए जैसे कि लेट tan इनवर्स, हाँ क्या টি লৈছো মই, ঠিক আছে টি লৈছো, ঠিক আছে। সো ইয়াত ডিফারেন্সিয়েশন কৰি দিয়া, d by dy, differentiate everything with respect to y because y থাকিব লাগিব। so I'll have 1 by 1 plus y square dy, then you'll have dt. Am I clear all of you? So I can write down dy is equal to 1 plus y square dt, and I'll replace dy with this. So যদি replace করিম, I'll have x into e to the power a ফালে রাখিব দিয়া, no problem, tan inverse y2 থব দিয়া, no problem. So we will have, just a minute. So in this case we will have tan inverse y2 কি ধরিল, we have assumed it to be t, and in the denominator I have 1 plus y square and e to the power t ধরিছো, and dy I can write down 1 plus y square dt, 1 plus y square 1 plus y square is gone. So we will be left with, थोड़ा सा जगह मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा ये होगा। हो गया, हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी e to the power t dt plus c, यहाँ जैसे है as it is रहने दो। Now this, how will you solve this all of you? Have you heard integration of two functions u v? So u integration v minus
differentiation of u integration of v whole integration समथिंग देखा है ना। इसको फॉलो करने के लिए हम लोगों को कॉलेज में 12th में पढ़ाया गया होगा आईलेट उन्हीं सा नाम तो इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ইয়াতে দুটা ফাংশন আছে সোৱাত one thing is called algebraic and the other is exponential। so যোনে ফার্স্ট আহিব in this is the chronology। so whichever will come first उसको u बनाएंगे और जो बाद में आएगा उसको v बनाएंगे। so exponential comes later। so exponential will become v and u will be algebraic। so in order to solve this u integration of v तो t को as it is रख दो integration of e to the power t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फिर आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t ये u डॉट है then integration of e to the power t dt the whole thing will be integral with respect to ये बड़ा साइन के साथ ये dt है ये इंटीग्रेशन साइन के साथ ये dt है it comes as an operator ना integration this works something like this। so यहाँ पे ऐसे आएगा तो integration of e to the power t is e to the power t as it is differentiation of e to the power t is e to the power t so definitely the integration will be e to the power t only। so t into e to the power t differentiation of t with respect to t 1 e to the power t का integration e to the power t e to the power t फिर बड़ा वाला integration बचेगा this will be this one ये तो कर दिया this is coming out to be e to the power t now we'll have this so I'll have t e to the power t minus e to the power t so I'll have e to the power t t minus 1 answer। So we will solve this equation and we will get x into e to the power tan inverse y on this side the integration of this will be e to the power t minus 1 plus c so x into e to the power tan inverse y and t को हम लोगों ने क्या लिया था we have taken t as tan inverse y तो e to the power tan inverse y minus 1 plus c this is your solution of differential equation। this is how we do it guys। am I clear all of you guys এতিয়া এটা কথা কোৱাচোন এইটো কোৱেশ্চন দেখিলা তোমালোকে আস্তুত সুধিছে ইয়াতে তো ইন্টিগ্ৰেটিং ফ্যাক্টৰ ওলাব কৈছে probably you never know Astu so they will ask you to solve it। now you see this question and now you see this question কোনটো ইজি লাগিছিল কোৱাচোন গেটৰটো ইজি লাগিছিল গেটত এনেকুৱা question হৈ যায় guys they just want to see the basic knowledge of the subjects they don't want to see whether you are solving 15 marks question or 20 marks question no they don't want to see that। so yes we will solve Astu का entire question paper complex numbers green theorem सब कुछ solve करेंगे फिर आपको फिर गेट का भी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा मैं तो you will have an idea कि भाई हाँ अच्छा हम लोग बेवकूफ है जो गेट का एग्जाम नहीं देंगे where it leads to multiple opportunities like jobs in PSUs, master's opportunities, IIT, and research-based works in IIC Bangalore or IITs, top IITs, sometimes National University of Singapore, full scholarships. You get everything through GATE। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं ये भी आस्तु का क्वेश्चन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 1 पूछा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या। सो यहाँ पे चलो let us see cos x dy by dx plus y into sin x is equal to 1 ये देख के लगा कि हाँ ये आसान है मेरे लिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा इसको। टेल मी गाइस क्या कर सकते हैं इसमें what we'll do first thing all of you will divide the entire equation with respect to cos x yes cos x দিয়ে divide করে দিন right so I'll have sin x cos x into y is equal to 1 by cos x হেফালে আহি যাব so this is very analogous to dy by dx plus py is equal to q sorry is equal to q आप बोलोगे सर sin x by cos x को tan x लिख दो मैं बोलूंगा ठीक है tan x लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ही रखो क्योंकि इंटीग्रेशन में इजी होगा देखना हाँ कैसे इजी होगा ये भी बता देता हूँ। एक बात बताओ
ডিফারেন্সিয়েশন অফ ডি বাই ডি এক্স অফ এক্স কিমান হয় অল অফ ইউ 1 1 वेरी गुड 1 है नाइस सो ये उधर चला जाएगा तो ठीक है फिर एक बात बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स किमान है 1 अपॉन एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स किमान होगा एल एन एक्स अब इसको इसको थोड़ा सा देखो तो इसको देखो हाँ ये पूरा इक्वेशन को देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने छोड़ दो ये सब छोड़ दो अभी पहले इस पे फोकस करो डिनोमिनेटर में क्या है एक्स न्यूमरेटर में क्या है 1 so numerator is the differential of is the derivative of denominator or not बोलो तो guys getting a point 1 is the derivative x को derive x को differentiate किया तो क्या मिला 1 मिला so if denominator is x and its numerator is its own derivative तब वो ln x हो जाएगा guys इसी तरीके से if you do anything कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 3 और ऊपर 8x है और इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया आपको तो आपको लगेगा कि क्या पूछ दिया भाई दिमाग खराब हो जाएगा आपका इसको देखो डिनोमिनेटर क्या है 4x² प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8x 8x इज इट्स न्यूमरेटर डायरेक्टली लिखो ln ऑफ 4x² प्लस 3 काम खत्म एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू ठीक है ये डायरेक्टली आप आराम से कहें कोई भी चीज लगा दो आप यू वांट एनीथिंग यू जस्ट राइट डाउन डायरेक्टली लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चलो एक क्वेश्चन को ही समझा देता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मैंने साइन एक्स बाय कॉस एक्स रखा क्यों सो यहाँ पे p का वैल्यू साइन एक्स बाय कॉस एक्स है q का वैल्यू 1 बाय कॉस एक्स है वेरी नाइस so let us try to find out the integrating factor will be equal to e to the power p dx it will be in terms of dx because p is a function of x and the differentiation is dy by differentiation yeah order of the differential equation is dy by dx so here we will have e to the power p dx e to the power p की जगह हम लोग लिख देंगे sin x by cos x इंटीग्रेशन dx मैंने ऐसे क्यों रखा जानते हो आप एक बात बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x राइट ऑल ऑफ यू ठीक है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट cos x तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x ऑब्वियसली उसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x होगा गाइस ऑल ऑफ यू बोलो तो so in this case integration of cos x dx will be equal to minus integration of sin x integration of sin x dx will be equal to minus cos x minus sin x आ जाएगा अब इसको देखो तो एक बार डिनोमिनेटर में cos x है तो cos x और ऊपर क्या है sin x आप tan x लिख देते दिमाग आपका लगता है कि tan x का तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो ऐसा है नहीं डिराइव्ड फॉर्मूला ही है तो cos x हम लोग इसको ऐसे कर लें अगर e टू द पावर एक माइनस साइन ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स अगर लिख दें चलेगा ना गाइस बात एक ही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैन वी राइट डाउन लाइक दिस ऑल ऑफ यू बोलो ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास गेटिंग अ पॉइंट तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर खुद है तो डायरेक्टली टेक द लॉगरिथम ln ऑफ द डिनोमिनेटर सो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x सो आई कैन राइट e टू द पावर माइनस ln ऑफ cos x एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू ठीक है अब एक काम देखो एक चीज यहाँ पे ln ऑफ a टू द पावर b कैन बी राइट डाउन b ऑफ ln a ऑल ऑफ यू गाइस ये सब जानते हो ना बेसिक फंडामेंटल रिलेशंस एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑल ऑफ यू गाइस डू यू नो दिस पावर बाहर आ जाता है ठीक है सो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं e टू द पावर ln ऑफ cos x e टू द पावर ln ऑफ
कॉस एक्स का पावर -1, क्योंकि ये -1 यहाँ है, वही तो -1 को बाहर ले आए तब तो ये होगा गाइस। सो cos x का पावर -1, ध्यान से सुनना, cos x का पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/cos x। 1/cos x is what, sec x। so I'll have e to the power ln of sec x। यहाँ पे बेस ऐसे है, तो e to the power ln of समथिंग है, तो ये sec x आ जाएगा। so this is our integrating factor, this is our answer to this question they have asked in Astu। integrating factor क्या है, integrating factor is sec x। तो अगर सॉल्यूशन करना हो, I'll have y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c। तो y into integrating factor sec x, q क्या है, q is 1/cos x, all of you, है ना गाइस, ऑल ऑफ यू। 1/cos x है q का वैल्यू, देख लो। तो 1/cos x is cos x, so 1/cos x integrating factor is sec x dx plus c, ऐसे करते हैं। 1/cos square x आ जाएगा गाइस, तो आप यू कैन फाइंड आउट, तो यू विल हैव 1/cos square x, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, 1/cos square x, ऊपर 1 है तो 1 को लिख सकते हैं sin square x प्लस cos square x। बहुत करना पड़ेगा ऐसे करके, ये खाली आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोला है, sec x निकल के आंसर आपके पास। तो इसमें में आ जाएगा sin square x प्लस cos square x प्लस 1, sin square x प्लस कौन सा tan square x प्लस 1। तो आपको tan square x का डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, समझने का, दैट इज इट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? कोई डाउट होगा तो बताना, हाँ, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको खाली पहले आंसू का क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया है उसके लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है आपसे। पहला आगे तो क्वेश्चन तो बुझी पैसा कहने का कोई लोग इंटीग्रेशन तो बुझी पाला, ऑल ऑफ यू, এটো এটো এইবোৰ ঠিক আছে। সো অলপ মাথাটো লগাব লাগিব, বিকজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন ইজ সাম সৰ্ট অফ integration is a tool, mathematical tool, which requires a high level of aptitude also to solve। মানে অলপমান ভাবি কিনে অলপ ম্যানিপুলেশন কৰি কিনেহে সলভ হয়। You will have to think in a way your aptitude matters the most in solving questions for your problems of integration। Now we have integrating factor for the differential equation, we will have dy by dx plus x by 2 1 minus x square y is equal to x by 2, ऐसे दिया हुआ है। तो वेरी नाइस, ये तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तो दिया हुआ है हमारे पास। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो बताना, हाँ। सो याते p ভ্যালু টু এইটো আছে, ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি হবো, ক্যান ইউ গাইস সে অল অফ ইউ, কেনেকে লিখিম ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর, e to the power, all of you, e to the power p dx, है ना। तो e to the power x by twice of 1 minus x square dx। फिर से मैं बोलूंगा थोड़ा सा अटेंशन देना, हाँ। देखो कैसे अटेंशन दोगे, ये 1/2 को बाहर निकाल लो, ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आई विल हैव x by 1 minus x square इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है सर। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट वी आर फाइंडिंग आउट। अब देखो तो इसको देखो तो, इसका डिनोमिनेटर 1 minus x square, इसका डिफरेंशिएशन कर दो अगर dy dx, तो व्हाट आई विल गेट minus twice x, होगा ना गाइस, ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो minus twice x हो जाएगा गाइस डिफरेंशिएशन करने से, लेकिन मेरे पास सिर्फ x है गाइस ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे इंटीग्रेशन करोगे ना, आपको लगेगा कि क्या करूं इसको, कैसे करें, दिमाग खराब होगा, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का सोचने लगोगे आप। हम लोग इतना सोचने का जरूरत नहीं है, व्हाट वी डू इज 1/2 कर दो और ऊपर को minus twice x बना दो, मैं बोला कि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।
तो माइनस ट्वाइस एक्स बनाया इसको, तो इसमें एक्स्ट्रा -2 आया, तो एक्स्ट्रा 1/-2 से आप डिवाइड भी तो कर सकते हो guys, कर सकते हो ना ऑल ऑफ यू। -2 खत्म, जो बचेगा यही होगा। दिस इज हाउ वी डू इट गाइस। e⁻ -1/4, ये तो आ गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो आई हैव ln ऑफ 1 - x²। होगा गाइस ऑल ऑफ यू, बताओ तो। गॉट माय पॉइंट, क्या हो रहा है? जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा गाइस, ln ऑफ दिस। सो आई विल हैव e⁻, मैंने क्या बताया था, ln ऑफ x⁻a, तो आई विल हैव a ln ऑफ x। a ln ऑफ x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो बाहर ये 1 - 1/4 है, तो ln ऑफ 1 - x² का पावर -1/4 ऐसे लिख सकते हैं, बेस e, so I'll have 1 - x² to the power -1/4 answer. This is your integrating factor guys. Am I clear to all of you guys in this class? Yes or no? All of you? বুঝি পাইছা কেনেকে কৰিছে? এটা কাম কৰিবা, তোমালোকৰ লগত এইটো আছে, like do you guys have Astu PYQ on mathematics আছে নে নাই? আছে। তাতে যিমান তোমাক ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ বা লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন সুধিছে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন, যদি নহয় মই কৰাম আকৌ, ঠিক আছে? তো আজি অলপ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো বুজালো। Then we will solve some in the next class we will solve some differential equations questions directly given to you. হ'ব পাৰে যে আজি ইভিনিং এ লৈ লওঁ ক্লাছটো। I might take the class in the evening. So be ready and be updated on the group. So let me know, and then in the next class I will teach higher order. Higher order is much more important, very very important. Complementary function and particular integral, extremely important. And I know since first order differential equation is a difficult thing for you guys, second order or higher order differential equation is yet another difficult thing for you all. But I'll try to make it as easy as possible for your examinations, as easy as possible. So I'll see you in the next class guys. Till then, take care all of you, and I'll see you in the next class. Take care.